2022. So the guests are making their way to the Dnyaneshwara Hall. Ladies and gentlemen, please welcome with a huge round of applause. Right now they are garlanding the statue of Sant Dnyaneshwara. Today we have got revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, Professor Ram Charan, business advisor, author and speaker, Shree Rahul V. Karad, Executive President, MIT World Peace University, Shri Dr. Mangesh Karad, Executive President, MIT AGT University, Swami Samarpananand ji, author and monk of Ramakrishna Mission, Swami Ashutosh Urstrabel ji, who is a spiritual guru and founder of Anamay Vedic Ashram Uttarakhand. Dr. Ashok Joshi ji is an eminent scientist, philosopher and thinker, and president of Macrolean Technologies. Dr. Sanjay Kamtekar, he is the Vice President of Global Marketing Strategy, Kamika. Dr. Sanjay Upadhyay, who is a motivational speaker and orator. Dr. R.M. Chitnis, Vice Chancellor, MIT World Peace University. And Dr. Milind Pandey, who is Pro-Vice Chancellor of MIT World Peace University. So any moment, all these dignitaries will be arriving, will be celebrating their arrival and the beginning of the 27th Endowment Lecture Series with a huge appreciation and huge round of applause. जैसे ही मान्यवर अतिथिगण सभागृह में प्रवेश करेंगे, आप सबसे नम्र निवेदन है कि कृपया अपनी जगह पर खड़े होकर जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। किसी भी कार्यक्रम को 27 साल तक और इस तरह के मैग्नीट्यूड का कार्यक्रम 27 साल तक चलते रहना, यह अपने आप में एक बहुत ही बेहद विशिष्ट घटना है। So, ladies and gentlemen, all the staff and faculty members, please welcome revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, Dr. Ram Charan sir, Shri Rahul V. Karad, Swami Samarpananand ji, Swami Ashutosh ji, Dr. Ashok Joshi ji, Dr. Sanjay Kamtekar ji, Dr. R.M. Chitnis sir, Dr. Sanjay Upadhyay sir, Dr. Mangesh Karad ji and Dr. Milind Pandey ji. Please give a huge round of applause as we begin the 27th Philosopher Sant Shree Dnyaneshwara, Sant Shree Tukaram Endowment Lecture Series 2022. I request all the dignitaries to light the lamp as the inaugural of this 27th Endowment Lecture Series. This is the 27th edition of Philosopher Sant Shree Dnyaneshwara and Sant Shree Tukaram Endowment Lecture Series and Orientation Program, a UNESCO-chaired program in quest of world peace. As the dignitaries light the lamp, please give a thunderous round of applause as we begin with the 27th Philosopher Sant Shree Dnyaneshwara and Tukaram Maharaj Endowment Lecture Series. Today we have with us galaxy of guests, and we have Professor Dr. Ram Charan ji, who is a business advisor, author and speaker. We have Swami Samarpananand ji, Swami Ashutosh ji, Dr. Ashok Joshi ji.
I request all the dignitaries to kindly come on the dais, please. We have Professor Dr. Revered Karad sir, Shri Rahul V. Karad, Dr. Mangesh T. Karad, and all the dignitaries, please. Thank you so much. So once again, we welcome all the dignitaries on the dais and all the learned audience, faculty members, staff in the 27th Philosopher Sant Shree Dnyaneshwara and Sant Shree Tukaram Endowment Lecture Series and Orientation Program, a UNESCO Chair Program for Culture of Peace through education and training. Please give a huge round of applause for consecutive 27th edition. I request all the dignitaries on the dais as well as all the audience to kindly rise in their seats for the national song. Please rise in your seats. I request all the dignitaries to keep standing for World Peace Prayer, which is designed by Revered Professor Dr. Vishwashanti Karad sir. Very scientific prayer for the noble cause of world peace. World Peace Prayer. Please fold your hands, close your eyes, join the World Peace Prayer. Thank you. Please take your seats. Thank you so much.
the 27th edition of this Endowment Lecture Series. And for any educational institution, 27 long years, it all began in 1996 with World Philosophers Meet at the very Sant Dnyaneshwara Hall on the auspicious occasion of the 700 Sanjeevan Samadhi Sohla of philosopher Sant Shree Dnyaneshwara ji. And then after that, we are arriving at the 27th year. I think kudos and a huge round of applause to revered Professor Vishwashanti, Dr. Karad sir, for continuing the tradition, for showing us the path, showing us the way. Actually, this program is for a UNESCO chair program for building a culture of peace through education and through training for all the staff, for all the faculty members, for their 360 degrees overall development. Physical, mental, emotional and social, as well as spiritual development. And in the language of revered Karad sir, a person is total only when he is physically fit, is mentally alert, is intellectually sharp, and he is spiritually elevated. And with that auspicious, with that noble cause, the Endowment Lecture Series is being implemented. Before we begin with the glimpse of all those 27 years, long years of procession, just wanted to know what is the outcome, what is the purpose of this Endowment Lecture Series. There are two aspects, friends, in life. One is called as speed, another is called as direction. Gati और दिशा जीवन की दो स्थितियाँ होती है. Science can give us speed, but only spirituality can give us direction. And what we want in life, to be successful, we don't want only speed in life. We want speed as well as direction. वो स्पीड का क्या मतलब है जिसकी दिशा ही गलत हो. अगर दिशा सही हो तो देर सवेर बैलगाड़ी भी पहुंचा देंगे, और अगर दिशा गलत हो तो फिर सुपरसोनिक जेट भी भटकाएगा, कभी पहुंचाएगा नहीं. और इस प्रकार के एंडोमेंट लेक्चर सीरीज और वो जो आयोजन है वो इसीलिए है क्योंकि दिशा मिले. आइंस्टाइन ने कहा था कि साइंस कैन डीनेचर प्लूटोनियम फ्रॉम द अर्थ, बट साइंस cannot denature evils from the hearts and minds of men. इंसान के दिमाग से कैसे निकालेंगे हार्ट्स एंड इविल्स? अगर बीमारी अगर शारीरिक हो तो एलोपैथी की दवाइयाँ काम करेगी, लेकिन बीमारियाँ अगर आध्यात्मिक हो, रिवेड कराट साहब के लैंग्वेज में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अगर ये बीमारियाँ हो, और एक व्यक्ति नहीं, समाज बीमार है इन बीमारियों से, इसके लिए हमको एलोपैथी नहीं चाहिए, इसके लिए हमको चाहिए सत्संग. सत्संग का मतलब होता है सत्य के साथ संग, या जो महापुरुषों के साथ सत्य है, सत्य धारण किया है, उनका संग. और ये जो लेक्चर सीरीज़ है, आप देख रहे हो कि इन महापुरुषों की रेंज में बहुत सारे महापुरुष आज हमें लाभ हुआ है, हमें प्राप्त हुए हैं. और इसलिए तहे दिल से पुनः एक बार सभी का हम स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में. और आने वाले 6 दिन अनेक वक्ताओं की रेलचल है. बहुत सारे वक्ता हैं, लेकिन सिर्फ समय के वजह से 2, 3, 4 वक्ताओं के नाम कि किस तरह के कार्यक्रम आगे आने वाले हैं. 25 नवंबर को वी आर गोइंग टू हैव ऑनरेबल श्री चंद्रकांत दादा पाटिल. ही इज़ मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, एंड ही इज़ गोइंग टू बी अ की नोट एड्रेस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति. ठीक इसी तरह से 26 वी आर गोइंग टू हैव ऑनरेबल श्री प्रदीप Kurulkar. He is a director, research and development establishment of DRDO, and he is going to speak on Vishwashanti Karita Shastra wa Shastra Az Udaya. On 27th, we are going to have Honorable Dr. Jagdish Hiramarji. He is an interventional cardiologist and director, Cath Lab, Ruby Hall Clinic, and he is going to speak on luck. At the same time, in the evening program, we are going to have Dr. Banu Panji. So we are going to have the galaxy of such type of speakers. Before we move ahead in the program, let us have a glimpse of the last 26 years of the series of Endowment Lecture Series. So I request technical team to kindly relay the glimpses for the previous Endowment Lectures. You know that the Endowment Lecture which we have started in the name of Dnyaneshwara and Tukaram as great philosophers, the philosophers must come out from their shell and they should come to the society and guide them. The Buddha, however, preached the equality of all human beings and anyone
who wished to enter the Buddhist order, Sangha, was not asked about the Varna to which one belonged before entry. जर आपली श्रद्धा वाढली तरच आपल्याला प्रज्ञा प्राप्त होईल, आपला आत्मविश्वास वाढेल. Get rid of the asuri sampat. Take the daivi sampat. And yatechasi tathakuru. So we are not teaching dharam. When we are not teaching dharam, different so-called religious bodies, they are teaching their religion. उनके सेमिनरीज हो सकते हैं, उनके मदरसेज हो सकते हैं, उनके आश्रम गुरुकुल हो सकते हैं. And everybody is teaching my religion is the best religion in the world. My religion is the only divine religion in the world. जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा. तर आपण थोडंसं गाईड करा की आपला व्हेजिटेरियन लोकांना आहारात हा B12चा समन्वय कसा साधला पाहिजे. या दोन गोष्टीतूनच आपल्याला विटॅमिन B12, विटॅमिन D3 आणि कॅल्शियम हे मिळत असतं. म्हणून शिवाजी महाराजांच्या साक्षेपातला जसं प्लॅनिंग आहे, क्वालिटी आहे, एफिशियन्सी आहे, तसं त्यांची जी वेळेच्या बाबतीतली पंक्च्युअलिटी इतकी विलक्षण आहे की आपणही थकवावं. फुलांच्या पायघड्यावरून चालताना काटे बोचले तर सहन करा. फुलांच्या पायघड्यावरून चालताना काटे बोचले तर सहन करा, कारण काट्यांना फक्त बोचणंच माहिती असतं. आपण काय पेरतो आपल्या वासरांच्या प्रमाणे त्याप्रमाणे आपल्याला मिळणारी फळं असतात. यातलं देवानं काहीही दिलेलं नसतं आणि काहीही आपल्याकडनं हिरावलेलं नसतं. मन फार चंचल आहे. माणसाच्या आयुष्यात बऱ्या वाईट गोष्टी घडतात, त्या मनामुळे घडत असतात. त्या मनाला लगाम लावला पाहिजे. सायलेंस रहेगा इन बिटवीन फ्रेसेस तो द फ्रेसेस सीधे मेरे हृदय से आपके हृदय में जाएगा. Changes, sustains, destroys, dissolves, creates and rears. And he says, you cannot glimpse another man's lived experience looking in through the window. You need to go into his space and live his life. Space enables us to look at life in its totality, and also how it shows us that we are such an insignificant, small, tiny component in this entire universe. पण या सगळ्या कालखंडामध्ये जो स्वतःचा आत्मविश्वास हरवणार नाही, जो स्वतःचा धीर गमावणार नाही आणि जो स्वतःच्या ध्येयाकडे लक्कपणे फक्त पाहत राहील, स्वतःच्या ध्येयाचं विस्मरण होऊ देणार नाही, तो निश्चितपणे यशस्वी होईल. आणि विवेकानंदांचे हे शब्द, जगद्गुरु तुकारामाचे शब्द, ज्ञानेश्वरांचे शब्द सत्यात उतरण्याची वेळ आली आहे. आणि ते 21वे शतक आहे. आणि किंबहुना या सर्व शतकामध्ये, या सर्व कार्यामध्ये वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी म्हणा, वर्ल्ड पीस सेंटर म्हणा, याचं कणभर तरी योगदान असावं एवढीच. Thank you. Please give a huge round of applause to this 27th Endowment Lecture Series. In a way, today is the 143rd day of the Endowment Lecture Series if we consider 27 multiplied by 7. So, huge round of applause again. Moving ahead, before we invite our next speaker today, Karad sir always believed that literacy is not education. To be literate is not to be educated. To be educated is an absolutely different type of things. To create citizens which are responsible as a global citizen. And for that, such type of endowment lecture series are organized. Moving ahead, we will welcome Dr. Sanjay Upadhyay sir. I request Dr. Sanjay Upadhyay sir to please guide us. He is a motivational speaker and orator, and he is a founder of the Mana Karare Prasanna. Through his humors, he touches the deepest core secrets of the life. So please welcome Dr. Sanjay Upadhyay sir with a huge round of applause. Please sir. आदरणीय मंच और मेरे दोस्तों, मुझे 3 मिनट दिए गए हैं. मैं स्टॉप वॉच लेके आया हूँ. देखिए,
विद्वान होने के दो तरीके हैं। एक आप खुद पढ़ाई करो लाइब्रेरी में जाके, या तो आप खूब सुनो। ज़्यादा पढ़ने से जो विद्वान बनता है उससे भी बेहतर विद्वान बनता है ज़्यादा सुनने से। उसे संस्कृत में बहुश्रुत कहा गया है। और बहुश्रुत वो है जो दिल लगा के सुनता है। केवल कान है, आवाज़ आ रही है, इससे बात नहीं बनती। कई लोग हैं ऐसे, इस हॉल में भी मिलेंगे अगले 7 दिनों में, कि कान है, आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन क्या सुना? तो कुछ नहीं सुना। ऐसे जवाब आ सकता है। मेरी हाथ जोर से विनती है कि अगर क्या बोला ये अगर सुनना है ना, तो अपने मन को कान के पीछे लाओ। अपना मन कान के पीछे आएगा तभी आपको सुनाई देगा, तब तक आपको सुनाई नहीं देगा। और ये बहुश्रुत होने का आसान तरीका है। और इसलिए मैं करार सर का अभिमान इसलिए है कि 27 साल तक कंसिस्टेंटली इस तरह से MIT के प्रोफेसर्स को बहुश्रुत बनाने की ये जो माला है, उसके लिए उनका अभिनंदन किया जाएगा। क्योंकि किताब में पढ़कर तो बहुत सारे ज्ञानी होते हैं, लेकिन जो बोलने वाला है वो पढ़ाई करके बोलता है, और फिर उसके भाषण में वो कैप्सूल मिलती है जो उसके टॉपिक का जो अर्क है, कॉन्सेंट्रेटेड है, वो वहाँ मिल जाता है। तो आज से शुरू हो रहा है ये यज्ञ, और आप सभी से विनती है कि अपने कान के पीछे मन लाओ, उसका बहुत फ़ायदा होगा। हम घर में भी यही शब्द इस्तेमाल करते हैं कि 10 बार कहा लेकिन सुनता नहीं है। पूरी दुनिया में जो केओस है वो सुनता नहीं, इसलिए ही है। रशिया यूक्रेन की बात नहीं सुनती, भारत में राजकीय पक्ष एक दूसरे की बात नहीं सुनते, स्टेट लेवल पे अभी कर्नाटक के मंत्री कुछ बोले हैं तो वो भी बात नहीं सुनते, हमारे घरों में भी हम एक दूसरे की बात नहीं सुनते। और आज ये कान जो है वो डॉर्मेंट होते जा रहे हैं और आंखें जो है वो पावरफुल होती जा रही है। तो मेरी आपसे विनती है कि आँखों को डॉर्मेंट होने दो, अपने कानों को डॉर्मेंट मत करो। अगले 7 दिन तक मन से सुनो और देखो 30 तारीख को आप बहुश्रुत बनते हो। धन्यवाद। तालियां थोड़ी सी कम पड़ गई है क्योंकि संजय उपाध्याय जैसे व्यक्ति के लिए जोर से तालियां होनी चाहिए। Constantly he is inspiring us through his unique qualities. Thank you so much, sir. And now, as per the tradition of MIT group of institutions, we will felicitate our distinguished guest today. So may I request revered Professor Dr. Karar sir to kindly felicitate and honor Professor Ram Charan ji. जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे प्रोफेसर रामचरण जी। जब हम उनको सुनेंगे आज तो हमें पता है कि इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज फीस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। सो प्लीज गिव अ थंडरस राउंड ऑफ अप्लॉज। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। Thank you so much. Next I request Revered Karar sir to felicitate Swami Samarpanananda ji. Swami Samarpanananda ji. Thank you so much. Huge round of applause, friends. Next, I request Revered Karar sir to felicitate Swami Ashutosh Ur Stobral ji. Thank you so much. Next, I request Rahul Karar sir to kindly felicitate Dr. Ashok Joshi ji. Ashok Joshi ji, who was now key person in the recently concluded Interfaith Harmony Conference.
Please give a huge round of applause. A trusted 4 decades friend of revered Karad sir. And next I request again Rahul Karad sir to kindly felicitate Dr. Sanjay Kamtekar ji. Thank you so much. Thank you so much. Ladies and gentlemen, the person just now 2 days back there was a World Interfaith Harmony Conference at the World Peace Dome and the unveiling of the statue of Prophet Joseph Smith, and the key person who was instrumental into all this, that grand event was Dr. Ashok Joshi ji. Let me introduce you Dr. Ashok Joshi ji. He is a founder of Microlean LLC, Salt Lake City, USA. He did his doctorate from Northwestern University, postdoctoral fellow from Pennsylvania University. He is a technopreneur, not only entrepreneur, technopreneur, investor, philanthropist, scientist, and prolific inventor. He is founder and president of Microlean LLC. He is an ex-owner and ex-president of Ceramtech Inc. and he is a director at Technology Holding LLC located at Salt Lake City, Utah, USA, and he is past board member, Industrial Research Institute, Arlington, Virginia. A few things I must mention about him is that Ashok Joshi ji is a well-recognized innovator and a very high technology entrepreneur. He has developed several technologies in the energy, environment, and biotech fields, and he is an inventor of more than 130 issued US patents, friends, 130 plus US patents, and 40 are pending to be approved. And he is a philanthropist engaged in the development and building of 3 schools serving 2,000 underprivileged children in rural India. And the astounding thing is, one of the schools is focusing on the mentally challenged children. So he has not forgotten